Hello friends, welcome to my channel. So in today's Hindu episode of May 22, we'll be discussing few important articles that are important for prelims and mains. So firstly, we know that there is a news that is very common these days, like the election news, and then there is a recent news about the Iran helicopter crash that led to the death of the president. So here it is important that which countries are bordering Iran. Iran is bordered by Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, and Caspian Sea in the north, and we saw that Nagorno-Karabakh region was a conflict region due to the tussle between Azerbaijan and Armenia. In east, there is Pakistan and Afghanistan. In west, there is Turkey and Iraq. And in south, there is Persian Gulf and Gulf of Oman. In south, there are two gulfs. So this is about Iran, that is important for prelims. And then we can see that what else? These are all election newses which are not important. So this is the editorial section which becomes very important. That is climate change, a passing cloud in Indian politics. So as the fifth phase of Indian general election is over now, and we can see that climate policy is not a mainstream policy or important policy that is being discussed by any political party right now. And even with the environmental activist Sonam Wangchuk's outcry over ecological degradation in Ladakh has been ignored by the media as well as the political parties, which needs a focus and which needs to be brought to the mainstream. So as we can see that the BJP and Congress have are reluctant to foreground climate change in their electoral platforms. We can see that in Congress manifesto there is a chapter which discusses about environmental protection and climate change authority and proposes a green new deal investment program, but in BJP manifesto such thing has not been seen. Any future looking policy has not been seen, but then it has praised its past efforts. So what exactly, like, why it is happening? So uh, we can see that the past efforts, like the national action plan on climate change, it is a guiding body for India's climate policy efforts. And then there is this national electricity plan, national green hydrogen mission, and energy conservation amendment act 2022. These are there. These documents have played a crucial role in shaping the energy landscape. But we have seen that in this year, in 2024 and 2023, there has been a rising temperature incidence, which has led to many health issues, as well as there has been animals and plants have been affected as well. So we need to curb the climate change, and it should be a main propaganda rather than uh, a sideline or a side propaganda. So there is has been a silence on climate change and electoral discussion, which is very disheartening. So we can see that the climate action tracker, which is developed by climate analytics, an independent global climate science and policy institute with its office in Berlin, gives India an overall rating of highly insufficient in its policy and action tracking when it comes to climate change. So India also lacks a bottom-up approach, a collaborative approach, but there is a beautiful example of collaborative approach on climate change when we see the Mumbai
climate action plan, which is developed by Mumbai municipality in collaboration with C40 and World Resource Institute. So we have seen that MK Ranjit Sinha and others versus Union of India. That was a case where the Supreme Court confirmed that people are have the right to be free from the adverse effect of climate change under Article 21 and Article 14 of Indian Constitution. So the challenge for India, therefore, is to bridge the gap between electoral politics and climate policy. It requires a shift in political calculations, जहाँ पे लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट एंड सोशल गेन को वैल्यू किया जाएगा रादर देन शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और immediate gratification. So we should practice this bottom up approach. We should we should focus on this climate, uh, curbing climate change. And India stands at electoral crossroads, and choices made now will resonate far beyond the immediate political cycle. So the political parties as well as the voters should focus on that. Then the second article, which focuses on preeclampsia. So what is preeclampsia? Preeclampsia is a condition which is a hypertensive disorder of pregnancy, which leads to multi-organ dysfunction in the mother. It commences around 20 weeks of gestation. These mothers could present with symptoms like swelling of face, hands and feet, severe headache, changes in vision, abdominal pain, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. सो ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिनका पहले रह चुका है उन मदर्स में, और एक हाइपरटेंसिव टाइप कंडीशन होता है 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद. तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है बोथ फॉर मदर एंड चाइल्ड. सो प्री क्लैम्पशिया जो है, मतलब बोलते हैं इट इज़ अ मिराकल टू give birth to a physically normal and neurological intact baby. So life begins before before the birth of the child. Life begins along with the health of the mother. So uh, it's very important to reduce the effect of preeclampsia and to tackle it. As we can see that in NFHS National Family Health Survey 5 statistics, which speaks volumes about perinatal mortality rate, we can see that it is 32 for 1000 pregnancies, and neonatal mortality rate is 25 for 1000 live births, and hypertensive disorders in pregnancy remain a leading cause for maternal death. So uh, it is important that we do screening, color Doppler, ultrasound, arterial pressure checking, placental biomarkers, pharmacological intervention for high risk cohort in the first trimester. So it is very important, and with along with that, it is important that we should do this radiological checking, community engagement, awareness, and then checking and keeping a check in all the trimesters. That is very important for the woman and the child. Then is the changing rules on onion export could impact. No, this is not important. Then is this analyzing local environmental footprints. So, climate change is a global concern, and such as water scarcity, air pollution, are often localized and regionalized. Excessive water use एक region में may not directly affect water scarcity elsewhere. Like in Karnataka, there is water scarcity right now, but in some region there is abundant of water and it is not getting affected, but in future it will obviously get affected. So it is very important to check the household environmental footprints, the local environmental footprints, and then the state and this union or the whole of the country and the world. So water and air pollution and carbon footprints of conspicuous and luxury consumption in India is a study where the author says that the affluent individuals, particularly those who engage in consumption beyond basic needs, they have
major contribution towards this climate change. There is a say that consumption choices are very high in affluent households. Like people are dining out, going on vacations, furnitures, buying furnitures, arranging social events. So here the luxury consumption basket is very high. So the environmental impacts of this thing is that water footprint was utilized to quantify water usage throughout various stages of production. The PM2 2.5 footprint encompassed both embedded emission and direct emission from household activities such as use of fuel, kerosene, and vehicular fuels. So there are very key findings which say that richest 10% of households are approximately double the overall average across the population, and they are maximizing, they are using this, they are contributing more to the climate change. So the rise in water footprint is the lowest at 39%, while CO2 emission stands at 55%. The Indian consumers, particularly those in top decile, are still in the take up stage, with only the wealthier segment exhibiting substantial increase in consumption. Majorly, the firewood in the consumption basket of poorer household is emphasized, showcasing contrasting impact of modern energy transitions. While transitioning from biomass to LPG reduces direct footprints, the lifestyle choices associated with affluence lead to a rise in PM 2.5 footprints. The study emphasizes that while sustainability efforts often focus on global climate change, global environmental footprints do not necessarily align with local or regional scale footprints. तो क्लाइमेट चेंज के बारे में था. फिर what is single window clearance? Single window clearance is a fastened clearance in case of infrastructural development in fragile regions. Like Supreme Court has now denied the the infrastructural development in fragile and systemic prone regions like Himalayan range. So this is a very important news in Odisha. Villagers are facing caste-based discrimination, and they are unable to cast vote. So this is important for sociology. In Puri, especially, this is happening. So the Human Rights Commission should take over and see the case. And then this there, as I have said, that Ibrahim Raisi has like he met with an accident and is dead right now. So what is important right now is that ईरान की जो फ्यूचर है वो किस पे, मतलब ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्टोरल हेड नहीं होते हैं, उनको मतलब कि आंसरेबल होना होता है सुप्रीम लीडर्स से, जो कि अब के सुप्रीम लीडर है अली खमेनी. तो इस डेथ के बाद जो चैलेंजेस ईरान के सामने है, पहला चैलेंज है कि उनको एक प्रेसिडेंट, एक ट्रांजिशन करना होगा, स्मूथ ट्रांजिशन फॉर द नेशन डिसरप्ट ना हो, जैसे कि एक और प्रेसिडेंट उनको वहाँ पे रखना है. सेकेंडली, जो प्रेसिडेंट की क्राइसिस रीडन सैंक्शन हिट इकोनॉमी को चलाएगा एंड एक फॉरेन पॉलिसी, एक स्मूथ फॉरेन पॉलिसी, एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को लीड करेगा. देन जो दूसरा चीज़ रहता है, इनके एब्रप्ट डेथ से
ईरान के कुछ जो फ्यूचर लुकिंग पॉलिसीज़ होंगे उनमें काफ़ी दरारें आएंगी। प्लस ईरान ने लास्ट मंथ एक ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था इसराइल पे आफ्टर इट्स कंसुलेट इन डमास्कस वाज स्ट्रक। तो अभी मतलब रिटालिएशन के लिए भी ये रेडी नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा एक मेजर इवेंट हो गया है इनमें। बाकी अभी हम एक्स क्रोमोसोम रिवाइवल इन ओल्डर वुमन इंक्रीजेस। स्पेशली हमको पता है कि मतलब इसमें दिया गया है कि एक्स क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है कि वुमेन में ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिजीजेस पाए जाते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम हमें पता है कि दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। और एक्स क्रोमोसोम कुछ जीन्स के लिए कोड करते हैं और जीन्स कुछ प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो इसके वजह से तीन टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि एक्स लिंक जेनेटिक डिजीज़, डिजीज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्स सी आई एस्केप, एंड एक्स क्रोमोसोम के एनियोप्लियोडी के लिए जो भी डिजीजेस होते हैं। तो एक्स लिंक डिजीजेस कुछ हो सकते हैं जैसे कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो, और फिर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आगामा ग्लोबुलिनेमिया, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ये होता है। बाकी 8% मेल्स में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, 1 in 3,500 to 5,000 में ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 1 in 2 लाख बर्थ में हमें दिखता है गामा ग्लोबुलिनेमिया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एनियोप्लोइडी की वजह से टर्नर्स हो गया, फिर क्लीनर फिल्टर हो गया। क्लीनर फिल्टर में 3 एक्स आ जाएंगे, टर्नर्स में 1 एक्स आ जाएगा। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है कि एक्स जो है वो इनएक्टिव हो जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम पे, वो फिर रीएक्टिवेट होता है, और उसी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि लूपस इरिथेमेटस जो कि किडनी, ब्रेन, लंग्स, जॉइंट्स, स्किन सबको अफेक्ट करता है, वो हो सकता है। या फिर जॉगरेन सिंड्रोम जिसमें कि ड्राई माउथ ड्राई आई होता है, या फिर हमारी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, ये सब हो सकते हैं इसी वजह से। तो क्या होता है कि हमने जैसे कि अल्जाइमर हो गया, वो भी ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है दैन मेल्स। एक जीन है USP11 करके, वो एक प्रोटीन मॉडिफाइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ये क्या करता है कि टाउ प्रोटीन को ब्रेन में एक्यूमुलेट करने देता है, और इसके वजह से क्या होता है कि जीन एस्केप्स एक्टिवेशन एंड इज एक्सप्रेस्ड मोर इन फीमेल्स। और फीमेल्स में ज़्यादातर अल्जाइमर होता है इसी की वजह से। तो अगर हम इसको डीपली स्टडी करें तो ड्रग इवोल्यूशन और थेरेपी इवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा इसके लिए। एक्स जो जेनेटिक मोर देन 500 एक्स लिंक डिजीज आर ओवर देयर। और ये है कि वाटरफॉल वाइट क्यों दिखता है। जनरली हम देखते हैं कि वाटरफॉल क्या है कि वाटर्स है, एयर से जब लाइट आएगा मतलब एक लाइटर से एक डेंसर मीडियम में आएगा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो एक वाटर ड्रॉपलेट से क्या होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्टेड हुआ, दूसरे से रिफ्रैक्टेड हुआ, ऐसे कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के वजह से क्या होता है कि वो वाइट दिखता है। जनरली कोई भी चीज़ वाइट तभी दिखता है जब वो पूरा मतलब कि कलर्स को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, पूरा कलर्स को। जैसे कि अगर हम देखेंगे वाइटनेस के तो मिस्ट है, पेपर है, वाटर वेपर है, कोलाइडल सॉल्यूशंस है, क्लाउड्स है, टैल्कम पाउडर है, स्नो है, वाइट पेंट है, शुगर है, वो जनरली सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्रैक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि सब वाइट दिखता है। टू सी अ वाटरफॉल वाइट लाइट शुड नॉट बी डिरेक्शनल, इट शुड बी कमिंग फ्रॉम ऑल डिरेक्शंस। अगर डिरेक्शनल एक ही डिरेक्शन से लाइट आ रहा है तो ये रेनबो हो जाएगा। थैंक यू।